हेलो गाइस, आई एम शुभम फ्रॉम शो ट्यूटोरियल्स। इस वीडियो में हम क्लोरोप्लास्ट स्टार्ट करेंगे। दिस इज द पार्ट 1 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ओके, बिफोर वी स्टार्ट, सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन टू गेट नोटिफाइड whenever new video is out. It is absolutely free from your side, but it will help us grow. So as we know, chloroplast is present in plants, right, which is specialized for photosynthesis. Okay, मतलब यूजिंग सनलाइट में फूड सिंथेसिस करते हैं और एनर्जी सिंथेसिस करते हैं, विच इज इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, राइट। तो अगेन क्लोरोप्लास्ट इज सिमिलर टू माइटोकॉन्ड्रिया, राइट। डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। कैन सी आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट। ओके, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, एंड दोनों मेम्ब्रेन के बीच में जो गैप है दैट इज कॉल्ड इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ओके, एंड सेंटर में जो प्रेजेंट है दैट इज कॉल्ड स्ट्रोमा, विच इज इक्विवेलेंट टू मैट्रिक्स इन माइटोकॉन्ड्रिया। एंड अंदर जो ऐसे स्ट्रक्चर्स है दैट इज कॉल्ड बेसिकली थैलाकॉइड। ओके, थैलाकॉइड सेंटर में है थैलाकॉइड स्पेस, उसकी मेम्ब्रेन भी है थैलाकॉइड मेम्ब्रेन। गॉट इट? एंड दिस होल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज, दिस थैलाकॉइड्स जो है, इंडिविजुअल थैलाकॉइड्स आर अरेंज्ड इन स्टैक्स। ओके, दूसरे के ऊपर अरेंज होते हैं। दिस इज नोन एज ग्रैना, राइट, ग्रैना। एंड यू कैन सी ये जो थाइलाकॉइड है एंड थाइलाकॉइड स्पेस, अंदर थाइलाकॉइड स्पेस यहाँ पे लिखा है, दिस ऑल्सो नोन एज ल्यूमेन। ल्यूमेन, गॉट इट? एंड ये जो थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन है दैट इज डेवलप्ड फ्रॉम इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट से ही थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होता है ड्यूरिंग डेवलपमेंट, and then it gets separate, it discontinues from the inner membrane to form proper subcompartment, right? One more picture you can see the internal structure of chloroplast. A is the transmission electron microscope micrograph to a single chloroplast. You can see जो fluidic part है that is stroma, and जो stacks में present है the structures में thylakoids है. Internal membrane is arranged in stacks, see, or grana of disc-like thylakoid that are physically separate from the outer double membrane that forms the envelope. Okay, B is the schematic diagram of the chloroplast showing the outer double membrane and the thylakoid membrane. Okay, outer double membrane means outer envelope and inner envelope. See, outer envelope membrane and inner envelope membrane, and जो अंदर स्ट्रक्चर प्रेजेंट है that is stroma, which is black space, and जो green structure है that is thylakoid. Basically why it is green? Because it is having chlorophyll. Okay, chlorophyll molecules है. You can see it is like capsule like structure है. Now this thylakoid can be said as स्ट्रक्चर जिसमें अगेन सोमा थैलाकॉइड है एंड ग्रेना थैलाकॉइड. ओके, ग्रेना एज वी सॉ हियर, ये पूरा एक स्ट्रक्चर है टैग के फॉर्मेट में, दैट इज ग्रेना. ओके, ग्रेना. और ये जो इंडिविजुअल स्ट्रक्चर है विच कनेक्ट्स द टू ग्रेना, राइट. अभी ये भी एक ग्रेना है, ये भी एक ग्रेना है. ओके, सो दिस इज ग्रेना थैलाकॉइड. एंड जो सेंटर में इसको कनेक्ट कर रहा है
that is stroma thylakoid. Okay, so stroma thylakoid is basically connecting the grana thylakoid. Got it? It is written here. Thylakoid membranes, electron micrograph of a section to a portion of chloroplast showing the stack grana thylakoid. Okay, as I showed you, so stack है, that is grana thylakoid, which are connected to one another by unstacked stroma thylakoid. Okay, stroma thylakoid है unstacked structure है, individual present है, which will connect the grana thylakoid. Okay, or we can call it as stroma lamellae. Right? The dark spheres are osmium stained lipid granules. Right? ये जो dark spheres दिख रहे हैं, these are the lipid granules. Got it? Now we will discuss some more points about thylakoid membrane. What are those? अभी जो thylakoid membrane है, that is having more protein content. Okay? Protein content is ज़्यादा present होता है. And जो lipid है, that is basically galactose containing glycolipid. Okay, galactose containing glycolipid. What else? जो लिपिड फैटी एसिड्स प्रेजेंट है thylakoid membrane में, that contain more double bond. Okay, more double bonds are present. तो फैटी एसिड्स thylakoid membrane में प्रेजेंट है, में higher amount of double bonds present है. So it gives more fluidity. Okay, डबल बॉन्ड होने के कारण thylakoid membrane ये ज़्यादा fluidity शो करती है. Got it? And one last point you have to remember, same like mitochondria, chloroplast also divides or multiplies by the help of oxygen. So this is all about chloroplast. That's it for this video. I hope this video helps you. If you find this video helpful, do let us know in the comment section. Like this video, share this video with your friends, subscribe to the channel and stay tuned for the upcoming video. Thank you.